हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्स जुड़ने वाली है जो कि हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, जो एक साहित्य प्रेमी है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऑथर कैप्टन प्रताप सिंह मेहता जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। और कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं एंड जी, वेरी नाइस। यस, थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? it's very interesting question you asked, and uh, I think it's the story of 1969-70. I joined to become Indian Air Force to become a pilot, right? I flew for almost 9 months, and after 9 months of flying, और मुझे कहा गया भाई आप एयरफोर्स स्टैंडर्ड से फिट नहीं हो, तो आपको अभी हम छुट्टी देते हैं, घर जाओ। लेकिन क्योंकि आप एकेडमिक्स में सब चीज़ों में अच्छे हो, तो हम आपको ऑल्टरनेट ऑफर देते हैं कि आप एयरफोर्स में नेविगेटर बन जाओ, एयरफोर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑलरेडी 9 महीने आपने एयरफोर्स में, और 12 महीने की करीब ट्रेनिंग होती है, या नहीं, हाँ, 1-1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें से 9 महीने तो हमने कर लिए थे। जी। तो वो बोले कि आपको ये ऑफर देते हैं। हमने कहा नहीं, हमको अगर ज्वाइन करना है तो आपकी एयरफोर्स की जो बेस्ट ब्रांच है उसी में ज्वाइन करना है। एंड दे सेड ओके, थैंक यू। और हम उस समय जोधपुर में थे, और वहाँ से उनसे धन्यवाद विदा लेकर अपने होम टाउन उदयपुर चले गए। बट देखिए, हमें पूरा कन्विक्शन था कि लोग ऐसे हम कोई अच्छा मौका जाने नहीं देंगे। लेकिन ये अच्छा मौका नहीं था हमारे लिए जो ऑफर आई थी। और हम एक बचपन से ही, या कहो 15 साल की उम्र से ही, हम योगा मेडिटेशन उसमें थे। तो आई न्यू आई हैड अ वेरी फर्म माइंड कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज फॉर द गुड। So I went home, and after 3 days, I get a telegram from the Naval Headquarters or Ministry of Defense कि you are selected for the Navy, and you have to report in 20 days. Oh, And everybody was surprised because I had appeared for some examination 2 years back, and they didn't select me that time. I was very keen to join, but now they said you join. I said yes, I'm joining, and I went to booked myself for the coaching,
Naval Academy was in Cochin, and then at that time, and I landed up in Naval Academy, and Wow. that was one of my most thinky. Look, uh, I must have a firm mind and also keep trying something better and do something which I'm passionate about. हेड्स ऑफ सर। और सच में आपने साबित करके दिखाया है, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और आप हम सब सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो, जिस तरह से आपने मेहनत की सर। कहीं न कहीं जो आज की जनरेशन के लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। और सर आपकी अगर मैं बात करूँ, आप उदयपुर से हो और आपकी फैमिली का एक इतिहास रहा है। तो मैं सर सबसे पहले आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी, आपका बचपन कैसा रहा है सर? बचपन तो ऐसा है, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, और जी। ये करीब 657 58 की बात है. ही वॉज कलेक्टर गंगानगर एट दैट टाइम. On I जी। was also young, 7 8 years old, and suddenly he said कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनको दिल्ली ले जा रहे हैं. अब मैं इतना समझता नहीं था. हम उधर ही मैं और मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, में से 4 साल बड़ी थी. तो हम उस समय मैं अगर 8 साल का था तो वो 12 साल की होंगी या 11 साल की. तो मेरे डैडी उधर गए दिल्ली लेकर. फिर 10 15 दिन बाद हम वहाँ थे हमारे स्टाफ के साथ. वी यूज्ड टू हैव one family maid or a caretaker, you can say. She was with us for almost 20 30 years, and she stayed with us for 50 60 years later on. Okay, rather. So हम हमारे डैडी ने हम उसके भरोसे और दूसरे जो स्टाफ है हमारे बंगलों में उनके भरोसे छोड़कर चले गए. और थोड़े दिनों बाद उस समय कुछ होता नहीं था, सिर्फ एक टेलीग्राम या चिट्ठी आती थी या फोन कॉल. पिताजी वापस आए, बोले भाई सॉरी, योर मदर इज नो मोर, शी पास्ड अवे. And that's how we both brothers and sisters. We had an elder brother also, and he was in Calcutta, and he was called, since he was elder, he was called to Delhi and be with them and all these things. He was almost 14 years elder to me, my elder brother. So वो सब कुछ ओह! समझते हैं दुनियादारी में. We just said, okay, gone तो gone, अभी क्या कर सकते हैं. Then we got transferred, and that maid used to sleep with me at night time, my sister and maid. And वो मेरे को कहानियां सुनाती थी बड़ी बड़ी. और फिर जी। बाद में वो कहानियां उसकी सारी फैमिली कहानियां होती थी, क्योंकि शी वॉज ऑलरेडी विथ अस फॉर 30 40 years. हर मदर इन लॉ brought her to our family, and that stories were passed down from mother-in-law to the our present maid or the caretaker. We used to call her Gigi. Gigi. Okay, she used to tell us all these stories of our ancestors, the stories of their chivalry. She used to tell us the stories about how various rituals and functions are taken place, and how some people got married, which she knew about, how some people were born. And later on in जी। I think 59 60, my father got transferred to Udaipur, and that's my native place. And we moved from government bungalow to our own Haveli mansion. It's a huge one. And there also this system continued, someone telling me those stories. And it ओह! used to inspire me a lot. And I used to always think I could be one of those when I grow up, be the ruler, be the prime minister, or be the or and they were all prime minister with military powers. That means they were also the commander in chief of the military. तो मेरे को था कि मुझको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, एंड वेरी फैसिनेटेड बाय फ्लाइंग. सो व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, आई ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज इन जयपुर,
and I started flying with the NCC. And my commanding officer really liked me, and they said, "Come, Mehta." And mostly people were addressed by their surnames. Nowadays, it's more trendy to say by the first name. Yes. Those days, it was more of a surname. So I learned my first lessons there in flying, and I was determined, and I joined Air Force, and the rest I told you what it is. यस यस सर। यस और सर जिस तरह से आपने बताया जो आपकी फैमिली का इतिहास रहा है उसके बारे में सर हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो मेवाड़ राज्य के जो प्रधानमंत्री राय पन्नालाल मेहता जी अ, के परपोते हो आप तो ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर वो हिस्ट्री क्या थी थोड़ा सा। ओके, जी जी। थैंक यू। इट्स लगता है आप बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हो। एंड राय पन्नालाल जी मेहता जी वॉज प्राइम मिनिस्टर। वो एक और मेवाड़ के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को प्रधान बोलते थे, प्रधान के नाम से, प्रधानमंत्री नहीं। वहां पे हर स्टेट में अलग होता है, किस स्टेट जी में दीवान बोलते हैं, किसी स्टेट के अंदर प्रधान बोलते हैं। मेवाड़ स्टेट थी, वहां पे प्रधान कहलाते थे। जी और उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था लक्ष्मीलाल मेहता, और मेहता जी जी जी। लक्ष्मीलाल मेहता वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मेवाड़ आर्मी, and Pannalal Mehta, Rai Pannalal, that was Rai was uh, the title given to him by the British government in their investiture ceremony, along with various titles given to the Maharana at that time, and and he was the only one given also the permission to use His Excellency as with the Rai, and no other prime ministers, और भी कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर दूसरी स्टेट थे, किसको हिज एक्सेलेंसी महामहिम का खिताब जो उद्बोधन करते हैं उसकी परमिशन नहीं थी। उनको ये खास परमिशन दी गई थी। और जिनके छोटे भाई लक्ष्मीलाल मेहता, मैं उनका 5th जनरेशन में पड़पोता आप ओह ऐसे अब चलो वैसे हूं मैं। ओके, जी जी तो अगर पन्नालाल जी उनके बड़े भाई थे और वो प्राइम मिनिस्टर, तो करीब 24 years he was in office. तो 1968 to 90 1868 to 94 1894, okay, and he was the prime minister, but actual prime minister from 78 to 94। और उससे पहले 68 टू 78 उनको मुंशी कहलाया। एक जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है आजकल, तो उस समय एक महकमा जी खास एक काउंसिल थी जो मेवाड़ की, उसमें उनको उसका मुंशी नियुक्त किया है। मुंशी का जी मतलब सेक्रेटरी टू द काउंसिल। ओके ओके, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया क्योंकि वो बहुत यंग थे। पन्नालाल जी करीब जी हार्डली 30 साल की भी उम्र नहीं थी। तो और उनके अंकल थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, बट वो ठीक नहीं चल रहा था, तो उन्होंने अंकल को तो प्राइम मिनिस्टर रहने दिया, लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर के पावर्स होते हैं वो पहली बार मुंशी को ट्रांसफर किए गए। मतलब उनके पास ये पावर था कि कैसे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कैसे स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो एज अ मुंशी के रूप में रहे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और उन्होंने मुंशी से प्रधान तक 4 महाराणा, उदयपुर के राजा को महाराणा का खिताब मिला हुआ था, महाराजा नहीं। जयपुर, जी बीकानेर, जोधपुर, उनके राजाओं को महाराजा का खिताब था, उदयपुर के राजा को महाराणा का खिताब था। तो उन्होंने 4 महाराणाओं की सेवा करी थी।
ओह! ग्रेट सर। और सच में हमारा सौभाग्य है उनके बारे में जानने का, और जो इतिहास रहा है, क्योंकि इतिहास की अगर मैं बात करूँ सर, तो आज की जनरेशन को इतिहास के बारे में पता नहीं है, स्पेशली अगर हम बात करें। तो सर, आप जो आपकी बुक भी आई है उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, लेकिन सर इससे पहले कैप्टन बनने तक तो क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, कितना मुश्किल था ये आपके लिए सफ़र? नेवी से मर्चेंट नेवी में जाना और उसके बाद कैप्टन बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। तो ये सफ़र कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? नहीं, मुश्किल नहीं रहा है कोई। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और मेरा नजरिया ये है कि रात होती है तो दिन होता है, समुद्र में लहरें होती हैं। आप इमेजिन करो, अगर रात नहीं है, सिर्फ दिन ही दिन है, तो कितना डल होगा लाइफ। बिल्कुल अगर सर। समुद्र में लहरें नहीं हैं तो बिल्कुल जी, फ्लैट ओशन, फ्लैट, आई हैव सीन फ्लैट ओशन। मैंने समुद्र में करीब 24 साल सर्विस करी है, तो मैंने कितनी बार समुद्र को देखा है कि एकदम मिरर की तरह सपाट, कोई लहर नहीं है। जी, 10 सेकंड के लिए अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद बोरिंग हो जाता है। तो ये जो उतार चढ़ाव आए वो एक इंटरेस्टिंग होते हैं। और नेवी की लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी, अब जैसे बताया, 8 साल की उम्र में आई लॉस्ट माय मदर, तो ये भी एक उतार या चढ़ाव कहो, है। नेवी में ज्वाइन करी, उसके बाद ये हर दिन, हर समय कोई ना कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती रहती थी। और हमने नेवी के अंदर करीब करीब लगभग ट्रेनिंग से लेकर, जब तक नेवी से हमने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया एज अ कमांडर, राइट, इन 94, उसके दौरान हमने बहुत जहाजों में सेल, नेवी के जो वॉरशिप्स कहते हैं, दे आर नॉट लाइक मर्चेंट शिप, दे आर वॉरशिप्स, आई एम श्योर यू नो, जी, वॉरशिप्स में काम किया। और जब शुरुआत, आपके करियर के शुरुआत में आपको चूज भी करना पड़ता है, और आप वॉलंटियर भी कर सकते हो कि आपको किस चीज में स्पेशलाइजेशन करना है। और नेवी में जनरल स्पेशलाइजेशन होती है, आप गनरी या मिसाइल ऑफिसर बन जाओ, मतलब यू विल बी डूइंग एक्स्ट्रा 1 ईयर कोर्स टू नो एवरीथिंग अबाउट मिसाइल एंड द गन्स। गन्स मतलब तोपें जो होती है, जी, बंदूकों की बात नहीं कर रहा हूँ, बंदूक तो हर सैनिक को चलाना आना पड़ता है। या आप चाहो तो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन जाओ, कि हर तरह के संचार साधन, क्या क्या इक्विपमेंट होता है, कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, उसके स्पेशलिस्ट बन जाओ। क्यों, कम्युनिकेशन भी इतना सिंपल नहीं है। अब वॉर टाइम में जब कम्युनिकेशन करते हैं या नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, तो जो एनिमी है या कोई गैर जरूरती आदमी है जिसको ये कंसर्न नहीं है, ही शुड नॉट हैक इनटू आवर कंपनी। हैकिंग आप जानते हो आजकल कितनी हैकिंग होती है, और टैपिंग होती है फोन की। तो नेवी में ये सिस्टम होता है कि आपका कम्युनिकेशन हर एक कोई हैक नहीं कर सके, और आप जो भेज रहे हो, ऑल कम्युनिकेशन आर थ्रू एयर, मीन्स कि दे आर ऑल वायरलेस। तो रास्ते में कोई भी पकड़ कर कैच करके, सिस्टम होता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपका कम्युनिकेशन हैक कर सकता है। ओके, एंड आपको वापस हैक किया हुआ कम्युनिकेशन भेज सकता है, मतलब टू मिसलीड यू, जी, होता है बहुत बार। तो बट एज ए कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट दे टेल यू हाउ नॉट टू गेट फूल्ड बाय दिस। सिमिलरली देयर आर अदर ब्रांचेस आल्सो। अंडर वाटर वॉरफेयर कैसे होती है, जहाज का नेविगेशन, संचालन, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। तो और उसके अलावा नेवी इज द ओनली सर्विस, 3 डायमेंशनल सर्विस। आप जब जी, नेवी की बात करते हैं तो आपको क्या एक मन में पिक्चर बनता है कि समुद्र में जहाज जा रहा है, उसके ऊपर हमारे सैनिक बैठे हुए हैं। जी, उसके अलावा
नेवी के अंदर हर जहाज पे आजकल हेलीकॉप्टर होता है, तकरीबन एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसके ऊपर ये फाइटर प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये होते हैं। सो नेवी के अंदर एक एविएशन ब्रांच मिनी एयरफोर्स जैसी भी होती है। नेवी इटसेल्फ हैज अ मिनी एविएशन ब्रांच। देन नेवी के अंदर अंडर वाटर भी जाया जाता है। आप एनिमी के पास गुप्त रूप से जाना है तो अंडर वाटर जा सकते हो, दैट मीन्स उसके लिए सबमरीन को इस्तेमाल करना पड़ता है। सो सबमरीन एंड एविएशन आर specialization by themselves, and I chose to naval aviation because I had a love for flying, and I went for naval aviation, and I learned about the uh, एज अ टेक्टिकल ऑपरेटर, मतलब नेवी में उस पद को बोलते हैं ऑब्जर्वर। और अगर जी, बहुत साधारण रूप में अगर आप जानना चाहो तो एयरफोर्स में नेविगेटर, बट नेविगेटर का एयरफोर्स में काम होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नेवी में ऑब्जर्वर की बेसिक ट्रेनिंग नेविगेशन से शुरू होती है, एयर नेविगेशन, यू नो। बट आपकी जो मेन जरूरत है कि दुश्मन की अंडर वाटर सबमरीन को कैसे डिटेक्ट करोगे जब आप हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, प्लेन में उड़ रहे हो, और उस सबमरीन को डिटेक्ट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय क्या करोगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जर्वर में होती है नेवी के। और जी, कि अगर जो भी नेवी में जो हेलीकॉप्टर में 3 जने 4 जने बैठे हैं, पायलट, को पायलट, ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जर्वर, whoever is the senior most, he also becomes the captain of the aircraft. This privilege is not in the air force. The navigator in air force can never become a captain of the aircraft. He can never command a squadron. तो मेरा ऐसा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग। जी। Many times I became captain of the, I used to fly as a captain of the aircraft. And ओह at वाह! one point of time, I was also the squadron commander in 91, 92, 93 at Port Blair. Means I was commanding air squadron of surveillance planes, and my responsibility was complete Bay of Bengal। ये देखना था कि हमारे कोई दुश्मन के जहाजों की या किसी तरह की कोई अनचाही एक्टिविटी तो नहीं है। जी। उसका अगर आप उदाहरण देखिए, आपको लग रहा है मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो आप कभी भी रोक सकते हैं मुझे, नो, नो ठीक है, सर, मेरे नो, को नो सर, अच्छा प्लीज़, लगेगा। प्लीज़। नो, नो सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जैसे 91 92 में एलटीटी बहुत ही सक्रिय थी, और एलटीटी का असर इंडिया पे पड़ता है, आप जानते होंगे, पता नहीं उस समय आप की बट आपने भी कुछ होमवर्क किया होगा कि एलटीटी ने भारत में भी बहुत तहलका मचा रखा था, और हमारे राजीव गांधी को शूट किया था उन्हीं एलटीटी वालों ने। He was assassinated by the LTT of Sri Lanka. Sri Lanka में LTT is a terrorist organization. They wanted to overturn and have their rule. You know, it is like the terrorists in Kashmir, sponsored by and anyway, no names, but they want to have a different rule in the Kashmir. Okay, pro-Muslim Islamic rules. तो जी, टेररिस्ट का भी था वहां पे, सिर्फ श्रीलंका में तमिल लोगों का होना चाहिए। तो एंड टेरर जो एलटीटी वाले शरण कहाँ लेते थे, अपने तमिलनाडु के साउथ कोस्ट में, जी, फिशरमैन बन के इधर उधर रामेश्वरम। तो हमारा था वो एलटीटी वाले ट्रेन होके कहाँ से आते थे, बहुत जगह से आते थे, बट एक इंपॉर्टेंट जगह थी सिंगापुर, इंडोनेशिया। वहां से वो किसी फिशिंग बोट में बैठकर श्रीलंका की तरफ जाएंगे। तो हमारा या जो काम था हमारे जहाज का, मेरे स्क्वाड्रन का, कि जी, one of the task was to detect any movement of LTT boat going towards Sri Lanka and catch them. And if you can capture them, good. If I can't capture them, sink them.
ओके। Okay, right? ओह! We were not in helicopter, we were in the plane, surveillance plane, which can fly for 4 to 5 hours, take off from Port Blair and go right up to 500, 600, 700, 800 kilometers, carry out surveillance. बट ये सब होता था, और इन सब के लिए ऐसा नहीं है कि चलो आज उड़ गए और उधर चले गए। इन सब जी, के लिए भी जो हमारा मुख्यालय है दिल्ली में, उनके पास इंटेलिजेंस आती थी। इंटेलिजेंस मतलब खबर आती थी, क्योंकि देखिए हमारे भी जासूस हैं सब जगह। सिंगापुर में जी, है, कोई जकार्ता में है, कोई कहाँ पे है, चुपचाप बैठे रहते हैं वो, नजर रखते हैं दूरबीन लगाकर या कुछ फोन के ऊपर। अच्छा, आज एलटीटी की बोट यहाँ से रवाना हुई है और जी, वहाँ जा रही है, तो वो मुख्यालय दिल्ली में बताएंगे। वो दिल्ली वाले हमको पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो हमारी कमांड थी उनको बताएंगे। हमारे जो एडमिरल थे वहाँ पोर्ट ब्लेयर में, वो हमको बताएंगे कि कैप्टन, यू देर इज अ सो इन सो प्लेस, यू हैव टू गो, इट्स फाउंड इंटेलिजेंस कि एनटीटी boat is going there, you have to take care. So that was, I had couple of such missions, many missions ओह! like this. Okay, so that was one job, and there were so many other things, like above, we all have a uh, exclusive economic zone around our coastline. That means जो हिंदुस्तान की नक्शा नक्शा है, तो हमारी कोस्ट लाइन जो समुद्र तट है उससे जी, 250 किलोमीटर तक, अगर कोस्ट लाइन यहाँ पे है तो इससे 250 किलोमीटर तक ये इकोनॉमिक जोन है। दैट मीन्स एवरी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड सेम रूल। तो उस 250 किलोमीटर में हम माइनिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। मतलब वहां पे जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है समुद्र के अंदर से, कोई भी ऑयल निकल रहा है जैसे है, या जी, उसमें बहुत अच्छी वैरायटी की फिश है, तो वो भारत का हिस्सा है, जो भारत का इकोनॉमिक जोन है। तो अब अंडमान इंडिया का है, तो अंडमान से दूर 250 किलोमीटर पे जी, वो सारा हमारा है। अगर किसी दूसरे देश के साथ जुड़ता है तो हाफ ऑफ हो जाता है। अगर लेट्स सी जी, द नियर बाय नेबर इज ओनली 100 किलोमीटर्स अवे, देन 50 किलोमीटर्स विल बी द डिवाइडिंग लाइन। बट if the fish in my economic zone is better and it earns more money, then the people from Indonesia, China, or some other countries will come and do the fishing there. So my fishermen will be deprived of all that benefit. So we used to keep check कि कोई बाहर के देश का फिशरमैन हमारे इकोनॉमिक जोन में फिशिंग नहीं कर रहा हो। तो ये एक ओह! मोटी मोटी बातें हैं जी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। और नेवी में उससे पहले, ये तो 91 92, उससे पहले 79 80 में जी, मैं रशिया डेपुटेशन पे गया था। वहां पे उस आईएनएस राजपूत, इंडिया फर्स्ट मिसाइल डिस्ट्रॉयर, उसके ऊपर भी जी, एक रशियन हेलीकॉप्टर होता है एंटी सबमरीन। सो उसकी जी, ट्रेनिंग के लिए हम रशिया गए थे, बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट गया था। आई वॉज वन ऑफ देम। फिर आईएनएस राजपूत पे किया हमने, वहीं से मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाया 3 साल तक। बहुत ही, जी, और उसके किस्से अलग अलग हैं। एंड मेनी टाइम्स इफ यू आर फ्लाइंग, एंड it is not very fun and fair. There are bad weather. You have to go through those bad weather. There is a storm. There is a यस, cyclone. You have, if there is a requirement, you have to fly. जाना पड़ता है। और बिल्कुल सर। बहुत बार ऐसा हुआ, अंडमान में भी, राजपूत पे भी, और भी जहां जहां में पोस्टिंग थी, many times we had a kiss with the death. Okay, that means ओह! almost everything, लगता था वापस नहीं जा पाएंगे, समुद्र में गिर के डूब जाएंगे। ओह! But with my pilots and myself both
working as a team, we managed to come back every time. That's why you see me sitting here and talking to you today. सैल्यूट टू यू सर। सच में आप हमारे देश के रियल हीरो हो। जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, कर रहे हो, जिनकी वजह से हम आराम से बैठे हैं, ये सच में आप लोगों को क्रेडिट जाता है। एंड सैल्यूट टू यू सर। और सच में मैं भी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आप जैसी शख्सियत के बारे में जानकर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। जी। और सर उसके बाद सर, क्योंकि आपके लिए मैं 2 लाइनें भी कहना चाहूँगी। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जी, मेरा ये एक शुरू से बिलीफ सिस्टम है, इट इज माय बिलीफ सिस्टम कि इट इज योर माइंड विच मेक्स यू डू एवरीथिंग, राइट? एंड अनलाइक वेस्टर्न फिलॉसफी, mind and brain are not same. Brain is a hardware. Any surgeon can cut open your skull and show you the brain. Mind is the software of your body. You can't see it, but you can feel it. Okay. Like I am right, working on the laptop. I have a CPU, I have a motherboard. I can see that. But what software, I can only feel it and know it's working here. So I always have learned this in my from my yoga gurus in my childhood. Ki, look, whatever you want to do, it is your mindset which will make you do it or prevent you from doing it. So after my voluntary retirement in 94, I decided to sail for some time. थोड़ा सा पैसा भी चाहिए था जी, because the pension is not good enough to live a life. जी, And why not? Always believed in that. Live a nice life. And the good old concept was take a pension, retire, and gossip, read a newspaper. That's what some of my friends back home in Rajasthan or small towns tell me. क्या करते हो? हम सारा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 4 घंटे निकल जाते हैं. And that's no जी, job at all. That's no way. But I sailed for some time. During my sailing off time, intermittent period, I didn't take a 6 month contract. I always took 1 month or 45 days contract and 1 month or 45 days off. During off period, another passion was to teach. That means my passion was to share my knowledge and help others also. So I ग्रेट, got into it as I got enrolled as a visiting faculty to a few maritime institutes because that something came naturally to me. During my career, not only I've commanded air squadron, I've commanded missile boats, ships. Okay, I have sailed on ships, I've sailed on aircraft carrier, uh, I've sailed on INS Rajput, doing both the duties together as specialization flying and during non-flying time you have to sail the ship. I mean, as per the instructions of the captain. Means so I joined merchant navy and qualified to become the captain of a ship. That's and I had more most of my business dealings, the teaching thing with the merchant navy, and that's why I use this prefix captain there because they know me more as a captain, captain of ship. Captain is coming to take a class. He's going to deliver a lecture or something. Captain Mehta, right? So हेड्स ऑफ सर। that's how my captain thing came, and I started teaching them.
And when required, I would go. When there is a call, I would go on a contract, sail the ship, mainly offshore. Short contacts and the offshore will drill ships. Offshore means where the oil and is being produced, extracted, survey, and things likewise. And off period, then gradually from maritime institutes by about 6 7 years later down, by 99 2000, I moved over to corporate training, and that was also very dear to me. The psychology of human Oh, being, the behavior. And I'm not a MSc in psychology, my daughter is. And when my daughter was doing her post graduation in, I think, 98 97, she used to ask me and I used to clarify her doubt. It's that psychology was out of experience. When I went through the book, I found, yes, I know it, but certain terms and jargons, yes, I could explain to them because it was naturally to me after 25 years of working in the Navy. And I also did my post graduation in human resource management during my off time. oh, oh, Okay. wow, so heads up. Yeah. So just because I was staying in Jew and Narsi Monji, NMIMS, I don't, you are from Bombay? Huh? Yes, Ritz? I'm from Shimla, but Are you? No, yes, but you live in Bombay, no? Bombay. Okay. Yes. So Narsi Monji, that NMIS Management Institute, were very close to my Wow. house. I said, "Chalo, let's join that." And I did Oh, my post graduation diploma in human resource management. And heads off, so sir. there was always an urge to learn and share what you have learned, share what you have experienced. That is my motto. ग्रेट सर एंड हेड्स ऑफ सर। और सर आपकी बुक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, गन्स एंड हाँ, ग्लोरीज, क्योंकि हमारे हिमाचल के जो स्टार है देखिए, अनुपम खेर आपको जी, शुरू में उन्होंने बताया भी था कि अप्रिशिएट मैं, किया है अमित जी। जी जी जी, अमित जी ने भी हाँ, अप्रिशिएट बिल्कुल किया है सही। बहुत सारे। यस यस, उसके बारे में हम जानना हाँ, चाहेंगे कैसा कैसे जन्म हुआ, क्योंकि इतिहास के बारे में लिखना जानना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में हम जानना बिल्कुल। चाहेंगे सर। ऐसा है, सॉरी, आई हैव बीन अ हिस्ट्री एंथुजियास्ट, मुझे इतिहास में हमेशा रुचि थी. That was my passion besides what my profession one side which will give me moolah and my bread and butter, and passion was something I enjoyed doing it. And as I mentioned that in my childhood, I grew up listening to the stories of my ancestors. They were rulers, they were ministers, they fought war, they sacrificed fighting a war, they sacrificed their life, martyrs. उनको वीर गति प्राप्त हुई, उन्होंने कई युद्ध लड़े. जी तो और ये सब मेरे अंकल वगैरह ये जानते थे कि इस प्रताप को इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है. 92, जी my father, who was with me in his at the age of 82 in Port Blair, he was जी quite hale and hearty, but not much of energy to move around on his own. He passed away when I was in Port Blair, and we did his ओह, last rites in Port Blair. But I told all my relatives, please don't come to Port Blair to pay your condolence, because going to Port Blair would cost a bomb, and I would not have any accommodation to arrange for their hospitality. So after जी 3 days of doing this, or 2 days, I went to my native place, Udaipur, where all my close and distant relatives came there. And one of my uncles said during that morning period, प्रताप, जी तुम अभी अपने ये, तुमको इस इतिहास में बहुत रुचि है, कुछ अभी लिखो उसके बारे में है. और जो अंकल ने कहा मुझे, उन अंकल का घर इज लाइक अ म्यूजियम. सारे एंसेस्टर्स की बहुत सारी फोटोएं हैं.
एक और अंकल हैं, उनके पास भी बहुत एंसेस्टर्स की पेंटिंग्स, जी, फोटो नहीं बोलना चाहिए, पेंटिंग्स हैं, रियल पेंटिंग्स। तो मैं बहुत थोड़ा उनसे इंस्पायर्ड हुआ, और जब फाइनली रिटायर हुआ तो आई पुट ऑन माय थिंकिंग कैप एंड सेड अभी कुछ करते हैं। तो आई चोक्ड आउट माय प्लान कि ठीक है, आता है, इंफॉर्मेशन कीप कलेक्टिंग। सो फॉर नेक्स्ट 5 years आफ्टर रिटायरमेंट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा, जो हो सका उन लोगों से मिला, मुंह जबानी बातचीत करी, लाइब्रेरीज में गया, और इन, देखा क्या क्या है इंफॉर्मेशन। राजा राजाओं के बारे में तो हिस्ट्री बुक है, लाइब्रेरीज में भी है, बट जी, जिन ये जो किताब मैंने लिखी है ये मेरे एंसेस्टर्स के बारे में है। बट क्योंकि एंसेस्टर्स भी बहुत ही अच्छी जगह पे थे, और उनके बारे में भी इस दुनिया को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर एक राजा महाराजा महाराजा कोई बुद्धिमान नहीं होता था। ओके, जी, है, बहुत कम इन्हें गिने महाराजा बहुत बुद्धिमान होते थे, और वो अपने राज्य करने में समर्थ होते थे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ राजा महाराजा हेल्प लेते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, अपॉइंट किया हुआ होता है जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उनको है। तो उन लोगों का लेकिन कहीं नाम नहीं आता है। हिस्टोरियन लिखेगा कि इस महाराजा ने ये किया, उसने पृथ्वीराज चौहान ने वो किया, महाराणा प्रताप ने ये किया। लेकिन महाराणा प्रताप के जो प्रधान थे भामाशाह, उनका भी बहुत नाम आता है, लेकिन दूसरे ऐसे प्रधान किसी का कहीं नाम नहीं है, क्या है क्या नहीं। बट ये सारे मेरे एंसेस्टर्स थे जिन राजपुताना में अलग अलग फैले हुए। तो उनकी, और मेरे कुछ अंकल्स ने पहले भी इनके बारे में एक छोटी छोटी किताब लिखी थी, वो ली, और जी, मेरे दूसरे अंकल ने कहीं ना कहीं से फैमिली के दस्तावेज इकट्ठे किए। मतलब कि आप, ये था नेवी की ट्रेनिंग के बाद, स्टार्ट, जी, डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट डे, व्हेन यू स्टार्ट यू कीप गेटिंग लीड्स, एक आपको राह मिलती है, अच्छा यहां से और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहां से और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वही मैंने रास्ता अपनाया, कि कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि मैं आज ये किताब पढ़ूंगा, कल वो किताब पढ़ूंगा, मालूम ही नहीं है। जब एक किताब खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसमें किसी दूसरी चीज का, राजा का, किताब का नाम आया, तो मैंने उस राजा को किताब के बारे में पढ़ा और उसकी और इंफॉर्मेशन निकाली। तो इस तरह से किताब लिखने का प्रोसेस शुरू हुआ। एंड बाय 97 आई बॉट माय फर्स्ट कंप्यूटर, बाय द वे, मैं लेके ओह! भी आया। हाँ, जी, और कंप्यूटर की स्टोरी अलग है। ये कि मेरे को ऑलरेडी कंप्यूटर यूज करना आता था, है, जबकि बहुत से लोगों को कंप्यूटर आज भी नहीं आता है, और मेरी उम्र में बिल पहुंच के तो कहते हैं कंप्यूटर को दूर रखो। जी, नो टेक्नोलॉजी, पीपल डोंट वांट टेक्नोलॉजी, यू नो। बट एनीवे, मैंने कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन, मैंने कहा मैं अपनी को क्या बोलते हैं, कोई किताबें पोथियां बढ़ानी नहीं है, मैं हर चीज को टाइप करके अपने कंप्यूटर पे रखता था। वो फ्लॉपी डिस्क होती, फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना है आपने? यस, यस, जी, 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 यस, फ्लॉपी डिस्क, जी, फ्लॉप, उसकी कैपेसिटी होती थी 50 MB। फॉरगेट अबाउट जीबी, 50 MB। जी, बट एनीवे, उस समय कोई पिक्चर्स, फोटोज और वीडियोस नहीं चाहते थे, तो सब टाइप करके उसमें रखता था, इंफॉर्मेशन डालता गया। और शुरू से आई एम नोन एज अ मेथोडिकल एंड सिस्टमेटिक पर्सन। तो राइट राइट फोल्डर्स बनाए, उन सब के अलग अलग इंफॉर्मेशन डाली। फिर ऐसे 8-10 साल निकल गए, फिर अच्छा अच्छा कंप्यूटर लेने लगे, और जी, फिर ये इंफॉर्मेशन लिखने का जारी रहा। आई यूज्ड टू ट्रैवल इन राजस्थान, आई यूज्ड टू मीट पीपल, आई यूज्ड टू विजिट लाइब्रेरी, आई यूज्ड टू विजिट archaeological department. I visited archaeological department of Rajasthan in Bikaner, went there, did a study, found out the documents, visited various city palace, Udaipur library, and the जी, Maharana of Udaipur present, who is known as Shriji Arvind Singh Ji Mewar. He was very kind enough to grant me permission, because my father and Arvind Singh Ji's father were well known to each other, you know.
We had good relations with most of the rulers. And so he said, Ari, you're doing research, my library is open to you. And he told the librarian, even that private section or the confidential one, please allow Commander Mehta to use it. Because there are manuscripts kept. He didn't want any manuscripts to be tempered or torn or something, but he allowed me. And I got lot of information. तो इस तरह से मेरी किताब लिखने का बिल्डअप सेशन शुरू हुआ और बढ़ता गया। और जो फिर मैंने देखा कि हिस्ट्री की किताब तो सब लिखते हैं, लेट मी राइट स्टोरी फॉर्मेट। ओके, क्यों कि मैं अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में स्टोरीज के बहुत हेल्प लेता हूँ। कहानियां क्योंकि कहानियों सुन सुन के बड़ा हुआ तो कहानियां कहने में मजा आता है, और कहानी कहने से लोग समझते भी बहुत अच्छे से और जल्दी से समझते हैं। यू एग्री नो? बाकी अब पावर पॉइंट दिखा दो तो ठीक है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बट कहानियां तो मैं so I made my coffee table book in anecdotal format, and almost 95% of anecdotes have an image to show. And that image is one of the old paintings, or some places I got the illustrations made, or some places मैंने भी कुछ मेहनत करी। तो ये जो old paintings are the treasure house of our family, which I went there, clicked with my camera, got it developed, made it, and stored it digitally in my laptop. That time it was a desktop, not laptop has come in last 10 years, but before that desktop पे मैं ऐसे store करता रहा। तो anecdotes, the relevant pictures, ये सारे उसके ऊपर रहते हैं। And slowly by 2010 कुछ फॉर्मेट बना कि अब इस फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करनी चाहिए। तो मैंने स्टोरीज, उसके रेलेवेंट पिक्चर्स, ये सब जोड़ना शुरू किया। एंड फाइनली 2016 मेरी बुक पब्लिश हो गई। एंड अरविंद सिंह जी मेवाड़, who was always helping us, and I wrote to him about one year, मतलब 2015 I wrote to his secretary कि look, I want him to write the foreword for my book, है? तो he said ठीक है, उस कमांडर मेहता को बोलो अपनी बुक की स्क्रिप्ट भेज दे। तो मैंने सारे का पीडीएफ बनाया, उनको भेज दिया, वापस आया, मैं कंप्यूटर में नहीं पढ़ूंगा, यू सेंड मी द हार्ड कॉपी। तो मैंने पीडीएफ को प्रिंट कर 2 हार्ड कॉपी एज पर द इंस्ट्रक्शन भेज दी उनको। फिर अरविंद सिंह जी ने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जवाब नहीं। सो आई कॉल्ड अप हिज सेक्रेटरी अगेन, क्या हो रहा है यार, ये इनको फॉरवर्ड लिखना है या नहीं लिखना है? तो नहीं सर, उन्होंने आपने जो कॉपीज बनाई तो उसकी एक और कॉपी बनाई यहाँ पर, और हमने जो उनके सिटी पैलेस में भी रिसर्च स्टूडेंट स्कॉलर्स होते हैं, जो सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूज बीन देयर फॉर 50 इयर्स और सो, एक कॉपी उनको दी, एक कॉपी खुद पढ़ रहे हैं, एक कॉपी किसी न्यूट्रल को दी। आप पढ़ो और बताओ कि इसमें कोई ये ढंग से किताब लिखी है या नहीं लिखी है, ऑथेंटिक है या नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे राजघराना को हर्ट करेगी। जी। उन्होंने 9 महीने लगाए, 9 महीने बाद उनका फॉरवर्ड आया। मैंने एक फॉरवर्ड बना भी दिया, मैंने कहा यार वो अभी महाराणा हैं, वो कहाँ लिखने बैठेंगे, उनको एक भेज दिया ड्राफ्ट, आप उसको थोड़ा ग्रामर वामर आपको अपने हिसाब से 1-2 लाइन चेंज करके भेज देना। उन्होंने सेक्रेटरी ने बताया, फाड़ कर डस्टबिन में फेंका, एंड ही रोट हिज ओन फॉरवर्ड। He's a good command over his English. And when the final book was out,
I requested, I want to launch a book. He said, yes, certainly, do it in my palace. So in City Palace, Udaipur, the book launch was done. I don't know if you have seen the video on YouTube or book launch. Have you seen that? No. Yes, yes, sir. Okay. It was, I think, one of the most majestic royal book launch video. And I told all Yes, my guests to come in the traditional dress. The men and yeah. women have to be dressed traditionally. If you don't have turban, I got the turban guy outside in the lobby. He will make a turban to your fit, your size, and then only you can enter. So that's the story of my first book, Guns and Glories. ओह! वाह सर! और जो उसका पोर्ट्रेट था सर, पन्नालाल जी का, आपने जो कवर पिक लगाई है, Ah, मतलब फोटो लगाई है, वो पन्नालाल मेहता जी की लगाई है सर। जिसको मतलब राजा रवि वर्मा ने, जो कि रिनाउंड आर्टिस्ट है, उन्होंने पोर्ट्रेट किया है। उसके बारे में भी सर, वो आपके माइंड में वो कैसे आया सर? जी। देखिए, ऐसा है, पन्ना लाल जी की ओरिजिनल जो ये पेंटिंग आप कवर पे देखते हो, वो बनाई है राजा रवि वर्मा, जो त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम के रॉयल फैमिली से हैं, राजसी परिवार से, बट उनको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो पेंटिंग बनाते थे कमर्शियली। ही यूज्ड टू डू इट। ओके, ही वाज नॉट द किंग ऑफ तिरुवनंतपुरम, बट ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली देयर। एंड पन्ना लाल जी सन, he was quite a networking, I mean, say today's term, networking person. Somehow the other, he had networked. In those days, networking was not WhatsApp or an email, not even phone call. It was through letters and messages and messengers. अच्छा, कोई त्रिवेंद्रम जा रहा है, भाई हमारे उनके लिए ये गिफ्ट ले जाओ, है, और ये चिट्ठी लिखी है, वो महीने जी। भर बाद उनको पहुंचेगी। तो his son name was Fateh Lal ji. Fateh Lal ji is the one who knew him. So one day, in 1900, then Maharana Udaipur, Fateh Singh ji, and he is Fateh Lal ji. Okay, Fateh Singh ji said, Ki, I want to get some paintings made of my ancestors, like Maharana Pratap, he himself, and few more people, ancestors, उनकी पोर्ट्रेट बनाना चाहता है। तो फतेहलाल, तू बता कि ये कौन अच्छा बना सकता है। फतेहलाल जी was his protocol officer. His father was a prime minister in 1894. He resigned and went away. Then his son was used as an protocol or the ambassador or whatever it is for all important jobs. If there was a message to be carried to Jaipur Maharaja, then Fateh Lal ji will go because he knew how to present it diplomatically. So he said, Fateh Lal, तो बता ये मेरे को ये पोर्ट्रेट बनवानी है किसको। तो ऐसा था, हजूर मैं पता लगाता हूँ। That's how it used to be. You always acknowledge. And he wrote to the Raja Ravi Verma. And in 1901, Raja Ravi Verma came there, and Raja Ravi Verma acknowledges this fact in his autobiography. There, Raja Ravi Verma ki bhi not autobiography. There's a biography, book biography. From there, I got this information because I was consulting left, right, center, anybody. By then, the internet had come. I had my computer, and I think 2005 I got my internet, and एक व्हाट्सएप जी के पहले एक ऑर्बिट होता था। ऑर्बिट, हैव यू हर्ड ऑफ दैट Yes, ऑर्बिट? yes, yes, I know. माय गॉड, Or कुछ और, yes, something like that. Okay, let's yes. uh, and he contacted him, and he came over, and then he started taking the order कि क्या क्या बनाना है, क्या नहीं करना है. But at the same time, the and Raja Ravi Verma, what he would do, he would ask his photographer to take pictures of the जिसकी पोर्ट्रेट बनानी है। तो वो महाराणा प्रताप की जो पहले की बनी हुई है, उसकी
25-30 फोटोग्राफ डिफरेंट एंगल से, कोई स्टैचूज बनी हुई है, जो भी है वो उसकी फोटो लेगा. Fateh Singh ji himself was alive, so he had a photo shoot session with him. Then one day he invited him for an evening. See, since he came at his at his invitation, but as a state guest, he said, "Come over to my garden for a evening. I will." So he entertained him there, and he called all the beautiful singers and the nautch girls for dance, this, that. अब उस समय तो यही था entertainment आदमियों का. And, जी, and Fateh Lalji's uncles were also called, invited. Means his eldest uncle, his father was Panna Lalji, his younger brother Lakshmi Lalji, his youngest brother Takat Singh Ji. And they all had held high position in their time in the state. Okay. Takat Singh Ji was the treasurer, Lakshmi Lalji was the commander, military commander. एंड ये जो आजकल पावर पॉलिटिक्स देखते हो ना, चलता है ना, मालूम है क्या हो रहा है जी, जी, बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन एंड ऑल. ये उस समय भी चलता था पॉलिटिक्स. ओके. मोस्ट ऑफ द पीपल वर हेल्ड बेंट ऑन removing Panna Lalji. Many people were hell bent on removing Panna Lalji because he was doing everything honestly. He was maintaining good relationship. There was no major war during his time. So they said, यार यस, हमारा तो कुछ पैसा बन नहीं रहा है. There's nothing for us, the other side. So जी, they attempted to kill him, assassinate him. They attempted to show him down. They used to fill the years of Maharana. कि ये, he's a corrupt man. He's this, is that. So finally, Panna Lalji, I think, uh, 1894, the British agent, the resident who was there, he advised him that there are too many people against you. And now Maharana is convinced you are a useless person, to Panna ओ, Lalji. Okay, so he said, best thing is to gracefully go out. And so he was told Panna Lalji, ki, look, you take 6 months leave, and then during the leave, you put up your resignation. ओ, So he took a leave, and there's a beautiful account in my book of his leave. How he went from Udaipur, traveled by train. That time Udaipur there was no train. There was a train from Marwar. So how he ओके, went to Porbandar, where en route he was hosted. What the Panalalji wrote a diary, and his great grandson published those diary into a books. Okay, I think I got that with me. So, and in his diary, he writes every day. He used to write Kedar gaye, kaise gaye, who hosted him, where he ओ, went to Porbandar. He took a boat. He went to Dwarka. He came back to Porbandar. He went to Junagadh. That's a beautiful account by itself. One day we can have a chat on that. So during his thing, he submitted his resignation and came. So for ओ, that evening with Raja Ravi Verma, his father was there, and Raja Ravi Verma said, "He's your father. My God, he's so handsome, so well dressed, so immaculate. Look at his beard. I want to make a portrait of him." I mean, it's like Panna Lalji said, "I can't afford to." Even then he may be Prime Minister's son. They were never extravagant. They never had a proper house haveli to live. ओ, Panna Lalji writes in his autobiography, when his son got married, Fateh Lalji, for to have an extra bedroom, he borrowed 20,000 rupees in 1869 to make ओ, extra room. Okay, in his add Haveli to it. But today, every politician, unless he has a house, he can't become a prime minister or politician. The present setup is different, but what I'm saying, that's how it is. So no corruption, no nonsense, nothing of that kind. So people were against them. But he said, I want to make a portrait of your father. He said, fine. So one day his father sat there in a garden, and the photographer took pictures of him, various angles,
Then he took those pictures. Those his photography had come, black and white. और वो बड़ा डब्बे वाला कैमरा होता था. Hello, smile, tuck. Yes. uh, and he took all those pictures and he made his portrait in Trivandrum and sent it, yeah, back to Oh, Udaipur. Okay, so that is the story wow. of Panna Lalji's portrait made by Raja Ravi Verma. And each day he spent in Udaipur, how he spent, whom he met, including that food he had, including the drinks he had. He also mentions in the evening party with Fateh Lal, we were given bhang. It's a local Oh. thandai of the dress. Then he concludes, Raja Ravi Verma, I can understand the all Rajputs have bhang and so they are good at fighting, but they are very bad at thinking. That's how the Raja Ravi Verma concluded in his autobiography. He has a right to think what he wants to, but that's how he thinks. Whereas my family was originally Rajputs, they were the Kshatriyas, and I've traced the history in my book, Thousand Year Story of My Ancestors. So they were the descendants of Prithviraj Chauhan, and Oh, so we were Chauhan Rajputs, and even in each that's suffix Chauhan or Rathod or someone, there are many Gotras. Do you know what is Gotra? I'm sure if you are aware. These yes, are yes. the different faiths everybody follows. But you are Chauhan, and there were 24 Gotras, and we were one of the Gotras called Devda. And Okay. our famous Mulli Manohar Devda from Bombay, who was no more late. He's also a Chauhan, but from Rajasthan. Originally, his forefather. I wonder if his present son knows about it or not, who is a politician. But they were Devda Chauhans, and they migrated over a period of time for what? For economic reasons. Migration takes place. Better job, better business avenues. So my ancestors were rulers of a state called Delwada. Have you heard of Delwada? When we talk about Ye- Delwada, what comes to your mind? Yes, I think. Yes, I think मैंने सुना है sir. Delwada Jain Yes, temples in Mount Abu, that is historically known everywhere. yes, yes. Now, you are not asking me, but I'm telling you one more story from my book. Okay. Delwada is, you want to listen to that? Yes, yes. I wanna, sir. Uh, Please. I hope you're not running out of time. We have almost No, no, finished no, more sir. than one No, no, hour. no, no. It's not like that, sir. Please You can cut continue. it into different segments and present it as you like. Yeah, 30 minutes, it's 40 okay, minutes, sir. 20 minutes. It's Okay. okay, sir. No So, problem. Please uh, continue. so the Jain temples, Delwada Jain temples near Mount Abu, are famous and known for their intricate artwork. The sculpture, the quality of marble, it's so beautiful. No other Jain temples match their quality in architecture, sculpture, right? But that where these temples are built near Mount Abu, it's on a hill, there is no place called Delwada. How did Okay. they get the name Delwada? In English, the spelling is Dilwada, but the name is Delwada, Okay. Del. Delwada is a very ancient state near Udaipur. Even that village or Okay. township exists today also. Delwada Okay. was a independent state, and after Okay. till about, and it was later on when the Udaipur Mewar state became powerful, they became their supporters, but it was independent rulers they had. Delwada, which is about, let us say, 30 kilometers about from Udaipur, on the way to Nathdwara, famous the Krishna uh, shrine, you know, this.
Delwada, the first history known is of Raja Sagar. He was a Devada Chauhan. He ruled Delwada, and it's in the book given there from where he came and how he came. He ruled uh, Delwada state, and he always supported the king or the ruler of Mewar for anything they wanted. If and anything means on those days, only thing was Muslim aggression, threat from the Muslims. Yes. That time they were coming in. He always went with his army and supported Mewar, and Mewar always chased away the Muslim aggressors. Always, they never Hmm. let them conquer it. Okay, and so one of their then after Rajasagar, his son came. He while fighting, he was became martyr. His great grandson came. His great grand, and at one point time, his Raja Shrikaran's wife decided she must go back to her parents' place. It's just too much of war, battles. His husband was killed, and husband was killed. The Tughlaq from Malwa came, and they had a battle. So he went to support Raja Shrikaran, Maharana of Mewar, and in that battle he was martyred. Oh. And before him, his father went for support to Rana Ratan Singh. And you know heard of Rana Ratan Singh? He was the husband of Padmavati, the most Oh, controversial film that okay, took place. So okay. he was martyred while fighting and supporting Maharana Rao, that time Rana Ratan Singh, in the battle near Chittor. So that was the glorious past of my ancestors. Then his wife decided, I must go back to her peer. I'm not, let's Maharana Udaipur decide who will be the ruler of Mewar. I'm going. So she left. She went to her पीहर पीहर मालूम है कहाँ है पीहर जो पिता का घर होता है तो वो जी। आई थी पाटन से पाटन गुजरात में एक स्टेट है वहाँ आई थी वो चली गई वहाँ पर उसने अपने चार बच्चों को वहाँ बड़ा किया और उससे पहले ऐसे कुछ काफी वाकया हो गए थे मुस्लिम अग्रेसर्स देलवाड़ा में घुस गए थे सो उस समय कितनी बार वहाँ के राजा और उनके दादा और उन लोगों को जैन टेम्पल में शरण लेनी पड़ी छुपना पड़ा तो ओह! और वो आजकल की वॉर नहीं है उस समय की वॉर में अगर जैन टेम्पल में शरण ली छुप गए हाइड किया तो वो कुछ 2-3 सप्ताह महीना 2-3 महीना चलता था एंड they were quite influenced by Jainism. So when she went there, her influence and liking for Jainism took place. And one Acharya who came to Patan, her children converted in, they embraced, not converted. We don't say conversion actually. Conversion is from one religion to another, but this is Sanatan Dharma, you embrace another faith. That's all. Okay. They embraced Jainism and then their descendants became Jain. They were in the service of to propagate Jainism, but they had उनके पास क्षत्रिय का खून भी था और जब वो जैन बन गए तो वो उन्होंने वैश्य में आ गए जी, ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर ब्राह्मण वैश्य फिर शूद्र ये चार क्लास जी, अपने वर्ण सिस्टम होता है तो ये जब जी, जैन कहा तो उनको वैश्य बनिया कम्युनिटी में गिना जाने लगा ठीक है बट उनका जो खून था वो क्षत्रिय था सो वो जब भी कहीं जाते तो उनके जो दूसरे स्टेट के रूलर्स है पाटन के रूलर्स है उनको बड़ा सम्मान दिया जाता और अपने मंत्री या एडवाइजर बनाया जाता था कि तुम्हारे पास तो बिजनेस का भी टेक्निक मालूम है हाउ टू नेगोशिएट एंड डील and also if required you can lead the army of that state so that is my ancestry okay
और कभी और बैठेंगे तो हजार कहानियां हैं। और उसी जी। का और मैंने तो उसी इंग्लिश की किताब का अभी मैंने पिछले 5 साल से रूपांतरण किया है, अडॉप्टेशन। So not 100% translation, but much more information, more knowledgeable, more experience, more feedback in the last 5 years. उसका रूपांतरण किया है। और उस जी। बुक के अंदर मैंने 2 हिस्से रखे हैं। पहला पार्ट इज अबाउट पराक्रम, दूसरा पार्ट इज परंपरा। जब मैं पराक्रम की बात करता हूं तो उस करीब करीब 90 70 80% गन्स एंड ग्लोरीज का रूपांतरण है, और उसमें और जी। भी कई नई नई कहानियां और थोड़ा एडिशन है। और परंपरा जो गन्स एंड ग्लोरीज में नहीं है वो है जी। कि राजस्थान की क्या रिचुअल होते थे, हेरिटेज क्या थी, यस। कस्टम्स क्या थे, हैं। जी। और आज ही मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाला है, जो मेरी सहयोगी हैं प्रगति बछावत, उनको जी। मैंने बोला बनाने के लिए। उन्होंने बहुत सुंदर 1.5 मिनट का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा कि बिल्कुल सर। हाँ, कि ये जन्म के ऊपर क्या सेरेमनी होती थी। जो आज का वीडियो डाला है उसमें है जन्म पर जी। क्या सेरेमनी होती है। एक होती है गोद भराई, एक होती है जी। सूर्य पूजन। आपको सुना है आपकी ने उसके बारे में? जी। जी। आपकी शादी, आपके हैं मैं परिवार शादीशुदा हैं आप? नहीं नो है नो सर। नहीं नहीं, मैं आप? शादीशुदा नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में अच्छा, सुना है ये सर। हाँ, जब जी। बच्चे होते हैं तो सबसे पहले उनकी गोद भराई का एक दस्तूर होता है। राजस्थान में दीज टर्म्स आर क्वाइट कॉमन, और जिसको ओके। अंग्रेजी में बेबी शावर कहते हैं। बेबी शावर, फिर यस। बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो जब जी। बेबी होता है तो अपने जो ट्रेडिशन है, ओल्ड ट्रेडिशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आजकल क्या हो रहा है, कि जी। जी। ओल्ड ट्रेडिशन है कि उसका वो अपने माता पिता के घर 40 दिन रहती है माता है। ओके। 40 दिन के बाद 40 दिन शुद्धिकरण का होता है। जी। उसके बाद अपने ससुराल आती है। तो उसके बाद जब वो ससुराल आती है, ये तो जी। सूर्य पूजन होता है। तो उसको पहली बार बच्चे के साथ सूर्य के अंदर बिठाकर हवन पाठ वगैरह होता है। और ये थोड़ा जी। बहुत फ्लेक्सिबल है, तो ये शॉर्ट में बताया है, इट्स लाइक अ टीजर, कि पूरा जी। इसकी कहानी आप मेरे आने वाली पुस्तक पराक्रम और परंपरा में पढ़िए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सच में सर, और भी हमें मतलब इतिहास के बारे में जानना है, क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और सर आपने ऐड भी किए हैं सर, कमर्शियल ऐड भी किए हैं आपने, टीवी कमर्शियल। आज ही सब कुछ पूछ लेना जरूरी है। जी, जी। ओके। अभी और भी सर अच्छा। बहुत कुछ है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम हाँ, ज़रूर, क्योंकि एक देखिए आप एक मेरी माइंड जीवन हो। बहुत ही, जी। आई एम अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन। यस, जब यस। बॉम्बे में आके रहने लगे तो जी। बॉम्बे में आके रहने पहले तो ये डिसाइड किया कि अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आई मस्ट शिफ्ट माय बेस टू बॉम्बे। ओके। रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद हम बॉम्बे में हम आके रहे। हमारे जी। पास मेरे फादर इन लॉ का घर था, वो यहाँ रहते नहीं थे, तो घर लिया। फिर 1-2 साल में थोड़ी कमाई कर ली, तो एक खुद का घर बना लिया। और अभी मैं अपने खुद के घर में 97 से यहीं रह रहा हूँ। हुँ। और जब यहाँ बॉम्बे में आए तो जी। बच्चों को सबसे पहले कहा, भैया देखो, माय डॉटर सेड मुझको मीडिया लाइन पकड़नी है। मेरा जी। बेटा बोलता है मेरे को भी मीडिया में जाना है। देन देयर वाज नो स्कोप कि लीव योर चिल्ड्रन एंड till they finish their college and then you are on your own. We help them in whatever they wanted to pursue, and we never impose ki I am become navy so you must join navy, or you must become a doctor or engineer or do MBA, or my wife जी। side CA तो CA करो। ऐसा कुछ नहीं, जो तुमको पसंद है वो करो। एंड आई जी। वाज वेरी क्लियर फ्रॉम माय चाइल्डहुड
even if you have to repeat a class or you have to chosen a wrong direction कि चलो मेरे को सीए करना है, मैं सीए करता हूँ क्योंकि मेरे डैडी बोल रहे हैं, देन यू फाइंड सीए इज नॉट अ कप ऑफ माई टी. देन दे सेड नहीं मेरे को ये करना है. कई लोग साइंस में जाते हैं, फिर कहते हैं साइंस नहीं पढ़ सकते, फिर वो कहते हैं, फिर वो बाप बेटे दोनों और सारी फैमिली क्या कहती है, मेरे बेटे ने 1 साल खराब कर दिया है. मतलब ये एक शायद एक आम बात है, तकिया कलाम है हिंदुस्तान के अंदर. 1 साल जी, खराब हो गया. मेरा अनुमान है, मेरे विचार हैं, कभी कोई साल खराब नहीं होता. जो भी आपने बिल्कुल। सीखा है, पढ़ा है, वो अनुभव आपके जीवन में काम आता है. 1 साल जी, आपने साइंस पढ़ी है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, वो इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं आपको जीवन में हेल्प करेगी. ओके. राइट। So similarly, my children did what they wanted, and I told them, यस, if anytime you want to change, you are free to change. Okay. And whatever money you have, I will support you. Rest you please earn yourself. I'm not going to take a loan for you. Lot of parents take, मेरे बेटे को अमेरिका भेजना है तो मेरे को 20 लाख का 10 लाख का लोन लेना पड़ेगा. उस समय भी होता था 90s के अंदर. इनका देख तेरे जी, को जहां जाना है, माय सन सेड मेरे को अमेरिका जाना है. इनका जाओ. He appeared for exam, everything. And he also managed to write his, you have to write an essay about yourself. And America, they यस, catch you on the essay, your thought process, your belief system, your heritage. वो आपकी लिखावट से साइकोलॉजिस्ट पढ़ लेता है कि ये बच्चा सिंसियरली आ रहा है या नहीं आ रहा है. And जी, he managed to get a few scholarship, but on his own he decided मेरे को अमेरिका नहीं जाना है. Which after 10 years I came to know he decided not to go. He didn't have sufficient money with him. Because I told him I can give you, तुम जा कहीं भी, मैं तो देख जो है मेरे पास है, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे पास कोई मल्टी मिलियन नहीं है. जी, Anyway, so his interest was in media, so I used to help him. uh, वो ही खुद ढूंढ ढांड के लीड लाता था. Then used to go for audition. And then one day when we went for audition, that company said, Captain, why don't you audition for, we need for a father's role or something like this at that time or something. तो मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है. हमने भी शुरू कर दिया. मेरी वाइफ को देखा, उनको भी बोला तो उसने भी शुरू कर दिया. So I must have जी, done modeling, commercial models for at least 20-25 products. awesome, And उस समय कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, बट ठीक है. I used to enjoy. जी, We used to escort our son. वो अभी 9th 10th में था, और बॉम्बे की दुनियादारी वगैरह, जहाँ हेल्प चाहिए जी, थोड़ा सा हेल्प रहता है. और यस, जब थोड़ा बाद में बड़ा हो गया तो वो फिर अकेला ही जाने लगा. हम उसको नहीं, मतलब when he went to college, we let जी, him go on his own. And that's how, and even my daughter started like this. She did her BA in our Jew college, Mithibai, if you have heard of it. After जी, doing her BA, she said she wants to become a voice artist. Ye wo. So her first assignment was on internet radio. You heard ओके, of internet radio? Those days they used to have a internet radio in 99. यस, यस, And आई थिंक आपने भी कमेंट्री की है रेडियो के लिए सर, एशियन गेम। हाँ. वो that यस, was in 81. So 81 आई थिंक। yeah, यस, I'm a multi personality. I used to sketch, यस, draw, paint, talk, confident of doing anything. मतलब jack of all, master of none. तो एशियन गेम्स में जो yachting event was in Bombay, and I have यस, been a yachtsman in the Navy myself, and I was crewing for my team, and we became the national champion in 1976. So I had a fairly good idea about yachting, and that was my passion, and I used to pursue it till the end wherever I got the facility, because yachting is one thing you need to have that facility. So I've राइट। done that commentary for that also.
My God. हेड्स ऑफ सर। यस, जैसे कहा भी गया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड हाँ, इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल, वो आपने सिद्ध करके दिखाया है सर। और कहीं न कहीं जो आपके बच्चे हैं उनको भी यही संस्कार मिले। अगर मैं नकुल सर की बात करूँ, जाने-माने आर्टिस्ट हैं, और आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छा काम किया है, और कहीं न कहीं आपकी जो संस्कार है, परवरिश है, और हमें भी सर सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ भी जुड़े हैं, वो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। तो सर उनके लिए भी हम कुछ आपसे टिप्स लेना चाहेंगे सर, क्योंकि आप एक माइंड कोच भी हो। सबसे बड़ा जो खेल होता है वो माइंड का होता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अ, देखिए, ऐसा है, जीवन का पहला सिद्धांत होना चाहिए, जो है मेरा, कि आखिरी सांस तक सीखना है मुझे। आई मस्ट लर्न, आई मस्ट बी ओपन टू लर्निंग टिल माई लास्ट ब्रेथ। आई शुड नेवर कंसिडर आई नो इनफ। रिटायरमेंट के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना, गॉसिप करना, ओ जी, राहुल गांधी ये क्यों कर रहा है, मोदी ये क्यों कर रहा है, एंड हैव अ डिस्कशन। Aimless discussion has no bearing. You can't, those people, those 90% of the people cannot change India. They can't do anything about it. But they enjoy gossiping. When you gossip, your mental energy is drained. Okay. So I believe in learn till the last breath and be always mindful. Mindful ka matlab, it's very easy theoretically. जी, Mindful means, let's say I'm walking on the road, रोड में खड्डे हैं, ऊबड़ खाबड़ है, you have option. Option one is what? Tell me. Criticize the government or your यस, setup. These people are not maintaining the road. कितनी बार देखा है, ये लोग पैसा खाएंगे, करप्शन. Now that negative thoughts start coming in. And while talking and gossiping, they fall down and either have a sprain or break bones. Then more criticism, because their mind is, what happens in a mind when we are idle sitting, or even you are sitting just now, if you are not mindful, you are either thinking about the past or you are thinking about the future. When you think about the past, you start worrying. That's the cause number one. And when you think about the future, you know daydreaming, hawaii ke liye banana nahi, think about the planning is good. It's not that I won't explain to you, that's a part of my course. uh, but thinking about the future is anxious anxiety. So worry and anxiety are because of thinking about the past and future. यस, आदमी डिप्रेस हो जाता है, हाइपर एंजाइटी, हाइपर एक्टिव होता है, ये करूं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, they can't make up their mind. So nowadays the buzzword is be in present. That means mindfulness. But I have not learned from the present Lord. I've learned from my younger days, whenever I was baptized by a Swamiji from Bihar School of Yoga. He had come to Jaipur and he told my father, my sister, these are your students, इनको meditation yoga सिखाओ. तब ओह! से I never looked back. And I've looked at the positive aspects of meditation, and I've gone deep into the study of meditation. I've studied the Vipassana part. I've done that course. And I found the meditation taught by Buddha, Lord Buddha, is one of the ओह! finest form. It has no bearing on any religion, caste, or sect. He simply राइट, says, be aware of your breath, your own breath.
Your own breath can be, you can have a faith of Krishna, you can have a faith of Allah, you can have a faith of Jesus. Your breath is your breath. Right. And that is one of the easiest way to get into the present moment. And today it's a commercial term, mindfulness, because if I say vipassana, many people will say, explain to me why it is, why that. But when I say mindfulness, Rich says, yeah, yeah, intelligent nod, yes, you understand that. Okay. So the first is learning is lifelong. Number two, practice being mindful. Okay, that means be in the present. What are the benefits of being mindful? Anything that happens, there are two things will happen. One is you will react or you will respond. Most of us react. When you react, you don't find a solution. When you respond, you give it a considered thought and view. It provides solutions. When you are in the present, you are aware of yourself. That means you know your strengths and you know your weaknesses. You know your values. You know what you want to do in the life. And Buddha said, work on your strength. हमारे स्कूल में क्या सिखाया जाता है? आप अपनी कमजोरियों पे ध्यान दो और उसको अच्छा करो. वो जीवन पूरा जिंदगी निकाल देता है अपनी कमजोरियों को अच्छा करने में. So this is what, when I take my sessions, I said, forget about your weakness. Don't worry. Work on your strength. When you work on your strength, what happens? You get success. Yes or no? When Yes. you get success, you get inspired to do more. Yes or no? Yes, sir. Right. When you work on your failures, what happens? Nothing. समझ नहीं पड़ता है. अभी छोड़ो इसको यार. जी. And so self-awareness means this. Okay. Therefore, be mindful. This is the definition of my mindfulness, not mine. This is the definition of mindfulness as explained by Buddha. Same thing. Lord Mahavir also talks about the same. Yes. Buddha and Mahavira were almost contemporary 2500 years ago, but they never met each other. They never copied कि आज मेरे को एक्टिंग करनी तो शाहरुख खान की कॉपी कर लेता हूँ, है, या अमिताभ बच्चन की कॉपी कर लेता हूँ. They were जी. independent. They were in the same area, but they never met each other. Mahavira propagated a certain school of thought and faith, but his main thing was preksha dhyan. Preksha dhyan means observe your breath for your well-being and success. Buddha said, observe your breath. It was now coined, later on, it was coined as vipassana. That is the key to your success. That is how, not to, they shared with us, a lot of Rishi Munis, they have, you see them, no, वो तपस्या कर रहे हैं. 1 घंटा 2 घंटा नहीं, आपको मैं बोलूंगा 1 घंटा चुपचाप बैठ जाओ मेडिटेशन में, शायद आपका मन भटकेगा, है कि आइसक्रीम कब जी. आने वाली है. And you will जी. get an aroma from your neighbor ki what cake is being baked. But those Rishi Munis used to sit for years together without moving themselves. It is, they had a perfect control over their mind. Okay, they sat still for 10, 11 years. Buddha sat in a meditation. He never got up. Mahavira, same. All these people, because they were mindful and they knew how to control empower their mind.
This is what I'm sharing in my corporate lessons through mindfulness. That means each one has to practice mindful meditation every day to energize your mind, not the brain. I told you in the beginning, mind is separate. Means Yes. you have a software in laptop. How do you energize and make sure your software remains pure? What do you do? Have you used a laptop? You know how to use Yes, computer? yes. I'm right now I am using laptop. Okay. No, I'm just kidding. Yes. We have to be careful about the virus and malware attacking your mind, the software. Yes or no? Software, sir. Same Yes, way, sir. the virus and malware for mind is the negative energy from people and the world around. I have to protect that. That means your software has to be strong. Antivirus. The antivirus for the mind is meditation. Meditation. Right, sir. So meditation is not a one-time activity. This meditation is to be every day, twice a day, thrice a day. Okay. खाना खा लूंगी मैं, स्नैक्स ले लूंगी, हैं, लंच जी, डिनर ब्रेकफास्ट नहीं मिस करेगी. मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है मेरे पास. तो फिर क्या बोलता हूं मैं हिंदी में? भुगतो. यू अंडरस्टैंड? भुगतो. yes. Then you जी, invited trouble, suffer. No, that's बिल्कुल very in सही a कहा lighter सर. sense. Yes. Lighter sense. कि जी, there are no, if lunch and dinner is essential, so is 10 minutes, 15 minutes, half an hour of meditation every day is essential for everybody. right. There's so much of agitation in our mind goes. So there are, this itself is a big topic. You can have a seminar on this itself. So मैं सारा अभी Yes, आज absolutely रिवील right, नहीं sir. करने. क्योंकि 80% लोग आजकल डिप्रेशन में है. 80% after COVID, sir. आते हैं मेरे पास. Yes. I take general work online. मैं सब ऑनलाइन करता हूँ, and even online coaching, one-to-one coaching is done by me. And if Okay. they follow, they will take benefits. But if they go to psychologist or take tablets or something, nothing is going to change. There has Yes, to be yes, right, sir. something you have to tell them which these psychologists or the psychiatrists don't talk about it. They only talk about the Western philosophy, the Yes. modern medical science. The modern medical science has no solution for this. Yes, they can empower their, what do you call, pharmaceutical industry with more wealth. Yes. राइट सर, बिल्कुल सही कहा है. और थैंक यू सो मच सर. इसके बाद में और सेशन रखना चाहूंगी सर आपके साथ. एक और भी बहुत सारी बातें हैं जो उसके बारे में जानना है, और आपकी जो अपकमिंग बुक है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. और भी सर जो इंडो एंड पाक वॉर हुआ था 1971 में, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे सर आपसे. Thank you. जी, Thank you एंड so थैंक much. यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है आपसे, क्योंकि मैंने आज बहुत कुछ सीखा है आपसे सर. एंड सैल्यूट टू यू सर. Learning till last breath, if that be the motto of the life, you will be almost 50% वाह. sailing smoothly. Thank you. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. प्रणाम सर. Pranam. God. थैंक यू सो मच एवरीवन. और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तूफान से
टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन